Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is the third lecture of our subject topological indices of chemical graphs. In today's lecture, we will discuss about computational techniques to finding the degree-based topological indices. So we will discuss these techniques, and after that, some exercises are given for your practice and some references if you are interested to learn and read more about these techniques. So the computation techniques for degree based topological indices. So first we recall our previous lecture briefly. Last lecture में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास दो मेजर टाइप्स के टोपोलॉजिकल इंडिसेस होते हैं और उनमें जो है एक जो फर्स्ट वन है जो डिग्री बेस्ड टोपोलॉजिकल इंडिसेस जो है, और इस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया जाता है. द रीज़न इज़ that degree based topological indices are somehow easy to tackle rather the energy based, eigenvalue based or distance based. And the general representation of degree based topological indices is given by this expression where Ti is the topological index, F is the function of degree of vertex P and degree of vertex Q, where G is a simple undirected and connected graph. So this is the general notation for topological index. So to investigate our degree based topological indexes for a large graph means we have some generalized graph with n vertices or with mn vertices or somehow 3 parameter. In our graph sometimes we involve one parameter. I mean our graph is increasing in only one direction or one iteration. Suppose like if we talk about path graph और मे बी स्टार ग्राफ, हम देखते हैं कि स्टार में या ग्राफ में हमारे पास एक पैरामीटर होता है, वो होता है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने n यूज़ हो रहा होता है. तो देयर आर मैनी स्ट्रक्चर विच इन्वॉल्व्स टू पैरामीटर. आई मीन दोज ग्राफ्स इंक्रीज इन हॉरिजॉन्टली and in vertically, so those involve two parameters. We will see in our examples and exercises these types of graphs. So when you are asking or you are given a graph to find degree based topological indices, so your first step will be to find the order and size of that graph. Notice and the second step, notice how many types of vertices with respect to the degrees and find their cardinalities. आपने ये फाइंड करना है कि आपके ग्राफ के अंदर कितनी वर्टिसेस जो हैं वो कितनी टाइप के वर्टिसेस विद रिस्पेक्ट टू डिग्री के एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि आपके ग्राफ में कितनी डिग्रीज एग्जिस्ट करती हैं और कितने वर्टिसेस ऐसे हैं जो उस डिग्री के हैं, उनको हम कार्डिनैलिटीज़ कह रहे हैं. तो आपने हर डिग्री के अगेंस्ट कार्डिनैलिटीज़ भी फाइंड करनी है कि इस डिग्री के इतने वर्टिसेस एग्जिस्ट करते हैं. एट नंबर 3, योर स्टेप 3 इज़ partitioning the asset. In step 2 we partition the vertex set, and in step 3 we partition the edge set into subsets such that how many edges we have with some specific degree. यानी कि हम ये कहेंगे कि हम जब एज की पार्टीशन करेंगे तो हमने एज की पार्टीशनिंग इस बेस पे करनी ही है कि हमारे ग्राफ में कितने एजेस ऐसे हैं जिनकी एक साइड की डिग्री जो है वो ए है और दूसरी साइड की डिग्री जो है वो बी है. क्योंकि हमारे पास जब हम एज की बात करते हैं तो हमारे पास दो वर्टिसेस आते हैं, क्योंकि हर एज के साथ दो वर्टिसेस इंसिडेंट होते हैं. तो हमने दोनों वर्टिसेस की डिग्री को देखते हुए एज पार्टीशनिंग करनी है. ऑफ कोर्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट एग्जांपल. And the 4, if you have done with step 2 and 3, then the fourth step is about just a computation. हमने क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन हमने सेकंड और थर्ड स्टेप में ली है उनको अपने रिक्वायर्ड टोपोलॉजिकल इंडेक्स में की डेफिनेशन में जस्ट इंसर्ट करना है और सम कंप्यूटेशन करनी है. तो आपके पास फाइनल एक एग्जैक्ट एक्सप्रेशन आ जाएगा उस ग्राफ के अगेंस्ट. So we will follow these 4 steps to find the degree based topological indices of graphs. So we have our first example, investigate some degree based topological, because we are using sometimes we use harmonic, sometimes we use Zagreb indices or
forgotten index, so we are not giving exact name. आपके पास जब स्टेप 2 और स्टेप 3 की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो उसको यूज़ करते हुए आप बेशुमार किस्म के इंडिसेस जो है वो फाइंड कर सकते हैं. सो इन्वेस्टिगेट सम डिग्री बेस्ड टोपोलॉजिकल इंडिसेस ऑफ C and n is greater or equal to 3 where C is a cycle on n vertices. ठीक है. To find the formula we just first observe the behavior of our cycle graph. Behavior mean if we have C3 there are n vertices and m edges. We are now trying to find the formula for our size and order and size here, where n is, in our first lecture we said that n is the number of vertices, I mean the order of the graph, and m is the size of the graph. So from C3 to we move C4. Here vertices are 4 and m is size is also 4. You can see the graph. Likely same in C5 we have 5 vertices and 5 edges. So one can easily continue this and make a result that our order, if our order, I mean number of vertices is n, then size will be n. हमारे साइक्लिक ग्राफ में जब n वर्सेस होंगे तो उसके अंदर जो एजेस हैं वो भी n ही होंगे. तो यहाँ से हमने ऑर्डर और ग्राफ का ऑर्डर और साइज जो है वो हमने पता कर लिया. अब हम जाएंगे सेकंड स्टेप के ऊपर. Second step is about finding the types of vertices with degrees. आपने लास्ट स्लाइड में ऑब्जर्व किया था, यहाँ पे भी आपको एक ग्राफ नजर आ रहा होगा, द जनरलाइज्ड ग्राफ ऑन n vertices of cycle graph. You can see that all the vertices are of degree 2. So we have no other vertex with degree 1 or 3 or someone else. So all the vertices are of degree 2. Here the degree of each vertex is 2 and the frequency of those vertices are n. I mean in cycle graph, if there are n vertices, then n vertices are of degree 2. So this is our second step. Now we move to the third step. We now partition the edge set of the graph depending upon the degrees of n vertices of each edge. यानी कि हमने हर एज के n वर्सेस को देखते हुए हमने पार्टीशनिंग करनी है एज सेट की. तो अगर हम इस ग्राफ को ज़रा गौर से देखें तो आपको नजर आएगा कि चूंकि एवरी वर्टेक्स हैव डिग्री 2, सो एवरी एज हैव बोथ एंड्स हैव डिग्री 2. So there exists only one type of graph which is 2 2. I mean the n vertices have degree always 2 and 2, and the frequency of these edges are n. As we said that the size of the graph is n. तो साइकिल ग्राफ में अगर हमारे पास n वर्टिसेस होंगे तो हर वर्टेक्स की डिग्री 2 होगी, और जब हम एजेस की बात करेंगे तो हर एज की डिग्री जो है वो n डिग्री जो है वो 2 2 होगी. तो यहाँ पे जो एजेस की जो फ्रीक्वेंसी होगी, एजेस की तादाद होगी, वो भी n ही होगी. तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आगे रिक्वायर्ड. इस इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग दीज इंफॉर्मेशन वी कैन फाइंड many degree based topological indices. So in our next slide let's find out some degree based topological indices, but keep in mind that we have n vertices of degree 2, and when we will talk about the edges, there we have n edges of degree 2 2. Why we find step 2 and step 3? Because we have some topological indices which are defined on the vertex set, like Zagreb index, first Zagreb index, the forgotten index. These indices are defined on the vertex set of the graph. Similarly, for step 3 there are many topological indices which are defined on the edge set of the graph. You can say the second Zagreb index, we can say the harmonic index, the Randic index, some connectivity index, and so on. We have vertex partition and the edge partition. So using these information we can find many degree based topological indices. So let's see our next slide. First Zagreb index of cycle graph, of course Cn. M1 of Cn is equal to here is the just definition of the first Zagreb index. यहाँ पे हमने फर्स्ट Zagreb index के फर्स्ट स्टेप में definition राइट किया. So in cycle graph Cn we have n vertices v1, v2, vn minus 1 up to vn, and the Zagreb index said that summation of the scales of the degrees of all vertices. हमारे पास n vertices हैं, हर एक की डिग्री का हमें स्केल लेना और सम करना है. We notice that in cyclic graph every vertex has degree 2.
So we just simplified and written as n times 2 raised to power 2 because we have n vertices. So simplify this expression, we have 4n. We can say that, so we can say that the first Zagreb index of cycle graph with n vertices is 4n. This means that when we put some values of n, 3, 4, 5, we will get the first Zagreb index. So here is for n. Let's check this in our previous slide. Yes, this is our previous slide. If we work on this here, according to our formula, m1 is 4n. Since here in this example n is 6 c6, so we have, if n is equal to 6, 24. So if we use the definition, here is degrees 2, 2, 2, 2, 2, 2. We need the squares and the summation. You can see that the answer will be again 24. So for cyclic graph on n vertices, we have generalized formula for n. आप n की वैल्यू वेरी करते जाओगे, आपको C6, C7, C8, इवन के आपको C100 जो साइक्लिक ग्राफ होगा उसकी आपको फर्स्ट Zagreb इंडेक्स की वैल्यू मिल जाएगी. So now we move to the second Zagreb index. Here we have m2. Notation of second Zagreb index is m2 cn is equal summation degree of vertices of n vertices of each edge. Here we can see that the second Zagreb index is defined on the edge set. So this is our, suppose first edge, this is our second edge, and so on. There are n edges, and we notice that the degree of each vertex or degree of each end is 2. So 2 cross 2, 2 cross 2, 2 cross 2. Again we have here m number of edges into 2 times 2 times 2 times 2 cross 2, and we just simplify that and we got the same answer for n. So in this case, the first Zagreb index and the second Zagreb index fortunately हमारे पास सेम आया, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि हर ग्राफ का फर्स्ट और सेकंड Zagreb इंडेक्स जो है वो सेम होगा, बल्कि काफ़ी रेयर होगा. ये एक रिसर्च प्रॉब्लम भी है कि वो कौन से ग्राफ हैं जिनके लिए फर्स्ट और सेकंड Zagreb इंडेक्स जो है वो सेम होता है. तो फॉर्चुनेटली साइक्लिक ग्राफ के केस में ये इंडेक्स जो फर्स्ट Zagreb इंडेक्स और सेकंड Zagreb इंडेक्स का फार्मूला जो है वो सेम आ रहा है. एनीवे, दिस इज द टेक्निक टू फाइंड द Zagreb indices, फर्स्ट Zagreb इंडेक्स एंड सेकंड Zagreb इंडेक्स. So first step is number of order and size of the graph. Second is the partitioning of the vertex set depending upon the degrees of each vertex, and the third step is the partitioning of the edge set depending upon the n vertices, degree of the n vertices of each edge, and fourth one is the just putting the values in the definition. कुछ मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं. Randic index की हम बात करेंगे. Randic index, we have the formula for Randic index is this, and we know that in cycle graph every vertex have degree 2, 2, and so there are because Randic index is defined on S set, so there are m edges whose n degrees are 2 cross 2. So overall is answer is m by 2. In cycle case, of course, m is equal to n, so n over 2. This is the generalized formula, and similarly you can see the general Randic index. So now move to another example, which is of course a simple example. Investigate some degree based topological indices of Kn, where Kn is a complete graph on n vertices. If we look here on K3 we have 3 vertices and 3 edges. K4 we have 4 vertices, but the size is now 6. Here K5 we have 5 vertices, but the size is 10. And similarly you take the larger value of n, like n is equal to 6 vertices, and we have m is equal to 16, size is 15. इसी तरह आप मूव करेंगे आगे K7 को देखेंगे, इसका ऑर्डर, इसका साइज क्या होगा. चूंकि कंप्लीट ग्राफ है तो कंप्लीट ग्राफ के लिए हमारे पास जो ऑर्डर होगा ऑफ कोर्स n, जो हमारे पास वर्टिसेस होंगे, तो हमारे पास एजेस कितने होंगे चेक करते हैं. इसी तरह आपने सीक्वेंस को इंक्रीज करते हुए जाना है और आपने एक फार्मूला बनाना है जो आपको साइज देगा इन टर्म ऑफ n. सो इफ वी हैव ऑर्डर
n, then the size will be n into n minus 1 divided by 2. This will be the size of the complete graph Kn. Okay, so now move to the second step, I mean the partitioning of the vertex set depending upon the degrees. Okay, let's move to our previous slides for better understanding. Here we have K3. You can see that every vertex has degree 2. In K3, every vertex has degree 2. In K4, every vertex has degree 3. In K5, every vertex has degree 4. You can easily notice that. And in K6, every vertex have degree 5. And in K7, every vertex have degree 6. This is because by the definition of the complete graph, each vertex should be connected with other vertex, of course not itself but other vertices. So complete ग्राफ में हर वर्टेक्स की डिग्री जो है वो n-1 होगी अगर हमारे पास n वर्टिसेस हैं. So we can see that degree of vertex is n-1. Every vertex has degree n-1 if we have order n and the frequency is n. यानी कि हमारे पास जितने भी vertices n vertices होंगे उन सब की डिग्री जो है वो n-1 होगी. It's an easy example. Similarly, if when we talk about the edge partitioning of partitioning of the edge set, both vertices n vertices have degrees n-1, n-1, and the number of edges will be, of course, because every edge and the total number of edges in a complete graph is n into n-1 divided by 2. So this is the vertex partitioning, this is the edge partitioning. So now just we will put these information into our topological indices and we will get the answer similar as we did in the case of cycle graph on n vertices. So we will use this information quickly. For Zagreb index, of course, we have n vertices. We have n vertices and every vertex has degree n-1. So the total, if we compute this, we have answer n into n-1. So the first Zagreb index of a complete graph is given by this expression. If we talk about the second Zagreb index, we notice that each edge has degree n-1. Both ends have degree n-1. So here, by using the definition n-1 cross n-1, and these are the total number of edges, and this is the final expression. So to find the second Zagreb index of complete graph for specific n, just put the values of n here and you get the second Zagreb index. So these are the two formulas, and notice that the value of the first Zagreb index and the second Zagreb index is different as we get in the previous example. जैसे कि हमने अपने previous example में देखा था कि साइकिल ग्राफ के लिए फर्स्ट Zagreb इंडेक्स और सेकंड Zagreb इंडेक्स जो है वो सेम आ रहा था, लेकिन वो एक फॉर्चुनेटली स्पेसिफिक ग्राफ था, बस एक खास ग्राफ के लिए ये काम हो रहा था. कुछ और भी ग्राफ ऐसे होंगे, लेकिन जर्नली ऐसा ट्रू नहीं होता कि दोनों की वैल्यू जो है वो फर्स्ट Zagreb की और सेकंड Zagreb की जो है वो सेम आए. इसके लिए आपके पास एक एग्जांपल आपको नजर आ गया, वो है कंप्लीट ग्राफ की. इसी तरह आप फाइंड कर सकते हैं हमारे पास Randic इंडेक्स ऑफ कंप्लीट ग्राफ एंड जनरल Randic इंडेक्स ऑफ कंप्लीट ग्राफ. So we move to our third example. Find some degree-based topological indices of T regular graph. Of course, I will not go into detail of this example because this is similarly as we did in previous two examples. जैसे कि हमने पिछले दो example में देखा था कि साइकिल ग्राफ में हर वर्टेक्स की डिग्री 2 थी, कंप्लीट ग्राफ में हर वर्टेक्स की डिग्री जो थी वो हमारे पास n-1 थी. इसी तरह जब हम बात करेंगे रेगुलर ग्राफ की, तो रेगुलर ग्राफ में भी हर वर्टेक्स की डिग्री जो है वो सेम होगी, टी होगी. टी रेगुलर का मतलब भी ये है कि ऐसा ग्राफ जिसमें हर वर्टेक्स की डिग्री जो है वो टी है. तो आपके लिए एक्सरसाइज छोटी सी ये है कि हमारे पास सबसे पहले ऑर्डर अगर हमारे पास एन वर्टिसेस का ग्राफ है तो उसके अंदर हमारे पास साइज जो होगा द साइज ऑफ द ग्राफ विल बी एन टी डिवाइडेड बाय 2. इन्वेस्टिगेट हाउ द साइज इज एन टी बाय 2. हियर एन इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड टी इज द regularity. I mean how much degree of each vertex is t. Okay, now move to the step
to every vertex, because the graph is t regular, every vertex has degree t, and the frequency and the number of vertices are n. So, and in the case of edges, both ends have degree tt, and the size is nt, because every edge has this property, and the frequency is nt by 2. So the rest of the things up to you. Just explore these formulas, how we get these formulas. One step, finding the first Zagreb index, only one step solution. Second Zagreb index, again a first step solution. You can easily explore the formulas. And next, for Randic index, general rating index, you can easily explore these formulas. Yes, so now move to a little bit, not very much, but a little bit difficult example, investigating some topological indices of ladder graph L2 L for ladder, and 2 is about what? I mean, I think there will be some h. Here we have 2 rows, 1 row, 2 row, and there are h columns. You can see here h columns, so we denote it by L2h. Okay, now let's start our first step, which is finding the order and size. Where we discuss this, I don't know. Anyway, we discuss it first. We find the order. Order mean if we have how many vertices we can have. When we have scale mean we have here L22. We have order is our 4 and the size is again 4. Okay, when we have L23, we are on now an extra box which is this, you can see. So now we have 6 vertices, but the edges are 7. So to enhance, to find more about our calculation, we take another example of L2H or ladder graph, which is 2 4. Now we have 4 lines or 4 columns and 2 rows. You can see that the order is n is 8 and the size is 10. Now we try to generalize. You can see that every time we increase a column, the order increase by 2. So here the columns are h, then the order will be 2h, because we notice that on increasing order, increasing a column by 1, the order change by 2. So the order will be 2h. We can check this, like when we have here 2 put h is equal to 2, then it will be 4. We have here h3, we put here 7, and similarly we can check this. So this is the order. Now we work for the size. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द L22, जब हम L22 की बात करते हैं तो हमारे पास साइज़ जो है वो 4 है. जब हमारे पास L23 की बात करते हैं, यानी कि हमने एक इन जो कॉलम है उसको इंक्रीज़ किया है, तो साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हुआ है 4. इसी तरह साइज़ आगे इंक्रीज़ हुआ है 10. यानी आप देख सकते हैं कि एवरी टाइम वी इंक्रीज़ आ कॉलम, द साइज़ इज़ इंक्रीज़ बाय 3. I mean plus 3. I mean first if term is 4, then 7, then 10, and 13, and 16, and so on. So the let's make the final conclusion for the size. I mean when we have L equal to 2, we have 4 edges, and for rest of the thing, every time we add 3 edges, and the remaining columns are h minus 2, because here we use 2 columns and the size is 4, and rest of the columns are h minus 2. Like these 2 columns are used in 4, and then we have 1 2 3 up to so on. These are total h minus 2 plus 2, then we have 4. So we simplify this. This is 3h minus is 6, 4 minus 2. So this is the formula for order. Let's check this formula. Like when we have h is 2, when h is 2,
put here 2 3 into 2 6, 6 minus 2 is 4. Yes, we are done. Now check for 3. When we have size 3, h is 3, 3 into 3 9, 9 minus 2 7. Yes, it's good. Now if we check for 4, 4 into 12 minus 2 10. Yes, 10. So this is the formula of generalized formula of size of the ladder graph L2H. Now we move to the frequency edge vertex frequency. You can notice that here every vertex have degree either 2 or 3. You can please notice here 2, 2, 2, 2, and further the middle one has 3, 3, and 3. If we go into the generalized graph, only the n vertices have degree 2, while the inner vertices every vertex have डिग्री 3. अदरवाइज तमाम वर्टिसेस जो है उनकी डिग्री जो है वो 3 है. यानी कि अब हमने फाइंड करना है कि इनकी तादाद कितनी. आप देख सकते हैं कि कोई भी जनरलाइज h लेंगे, आप h को 2, 3, 4, 5, 6, 7 ले लेंगे, आपके पास हमेशा 4 वर्टिसेस होंगे जिनकी डिग्री जो है वो 2 होगी. देयर आर ओनली 4 वर्टिसेस विद डिग्री 2. रेस्ट ऑफ द vertices all have degree 3. You can see that. So only 2 columns, 1 and 2, only 2 columns are giving vertices with degree 2, and rest of the columns h minus 2 columns are giving vertices of degree 3. So h minus 2 here and here. So 2 times h minus 2. There are 2 into h minus 2 2 vertices of degree 3. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास h minus 2 vertices हमारे पास यहाँ से आएंगे, और इसी के पैरेलल h minus 2 हमारे पास वर्टिसेस यहाँ से आएंगे जिनकी डिग्री जो है वो 3 होगी. सो वी हैव 2 into h minus 2 वर्टिसेस ऑफ डिग्री 3. Yes, so our column is complete. So now we will find the edge partitioning. हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स के एजेस हैं. सो लेट्स आई जस्ट फर्स्ट रिमूव सम डाटा हेयर फॉर मोर एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग. So notice that we have vertices here. I write the degrees here, you can see that there are vertices with edges with degree 2, 2, 2, 3 and 3, 3. There are no other type of vertices. Here we have first type of edges are 2, 2, second type of edges are edges with degree 2, 3, and third type of edges are degree with 3, 3. Now we need to find the cardinalities, यानी कि how many edges are with degree 2, 2, degree 2, 3 and degree 3, 3. अगर आप if we notice that there are only 2 edges, only this one and this one with degree 2, 2. So there are only 2 edges. हमारे पास सिर्फ 2 edges ऐसे हैं जिनकी n vertices जो है वो n vertices की डिग्री 2, 2 है. इसी तरह अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा कलर को चेंज करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँ. सो here we have one edge with degree 2, 3, and second edge with degree 2, 3, and third edge with degree 2, 3, and 4 edge with degree 2, 3. So there are only 4 edges with degree 2, 3 here. You can see that. Rest of all the edges और बाकी जो भी edges हैं उन सब की जो डिग्रीज है वो हमारे पास आएगी 3, 3. इसको फाइंड करने के 2 तरीके हैं. एक तो तरीका ये है कि आपने जो साइज़ निकाला है, अगर आपने साइज़ 3 निकाला है तो उस साइज़ में से आप क्या करेंगे 2 + 4 को माइनस कर देंगे, और आपके पास जो है वो बाकी जो एजेस हैं क्योंकि वो 3, 3 वाले हैं तो हमारे पास बाकी एजेस का जो है वो डाटा आ जाएगा. बाकी एजेस हमारे पास कौन से हैं, तो इसी तरह आप देख सकते हैं हमारे पास साइज़ है. वी हैव साइज़ 3h - 6 and -6. 2 + 6 we have the answer 3h - 8. So we concluded that here there are only 2 edges with degree 2, 2, 4 edges with degree 2, 3, and there are 3h - 8 edges with degree 3, 3. तो यहाँ पे हमने स्टेप 2 और स्टेप 3 को कंप्लीट किया है. हमने वर्टेक्स सेट की पार्टीशनिंग कर ली है, हमने एज सेट की पार्टीशनिंग कर ली है,
और अब हम इन पार्टीशनिंग की मदद से हम फाइंड करने ट्राई करेंगे सम टोपोलॉजिकल इंडिसेस. सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Okay, anyway, so this is the explanation of about the ladder graph. Ladder graph is a one-dimensional graph. Here we only change h. We have generalized form of ladder graph which is called a square grid, or not square grid because sometimes it could be rectangular. So we can for the moment we say it grid. The variation of h and v is greater or equal to t. Now we have two parameters. I mean, we have rows here and we have columns here. In our previous graph, I mean in ladder graph, we have only two rows. If we restrict here, this is a ladder graph, but now we will discuss about some generalized grid with the two parameters h and v. I mean, this graph is increasing in both direction, like the horizontally and the vertically. यहाँ पे थोड़ी सी हम बात करेंगे अबाउट वर्टेक्स पार्टीशनिंग की. आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट सम टोपोलॉजिकल इंडिसेस. सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द वर्टेक्स पार्टीशनिंग. Notice that we have only 4 vertices with degree 2, which are 1, 2, 3 and 4. These are of degree 2. Now I change color. What talk about the degree of 3. Rest of the vertices from upper and from left side and from bottom side, all vertices are of degree 3. If you notice that this is again we have 4 sides, and from upper and left, from upper and lower we obtain 2 into h minus 2. The h minus 2 is due to these column because we are minus 2 column, first column and the last column we are excluding this. So we have h minus 2 column, and from sides we have 2 into v minus 2. Here we are excluding the lower row and the upper row because these are we are here. So now let's talk about the number of vertices with degree 4. हम देखेंगे हमारे पास इस ग्राफ में ग्रिड में 4 वर्टिसेस वाले कितने वर्टिसेस हैं जिनकी डिग्री जो है वो 4 है. लेट्स सी. इफ वी टॉक अबाउट फर्स्ट एज, वी कैन सी दैट द फर्स्ट कॉलम and the last column there is no vertex of degree 4 in first and last column, so we left there are h minus 2 columns. Similarly, if we talk about the I just here if we talk about the v, I mean अगर हम बात करें रोज की तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो है फर्स्ट रो और लास्ट रो जो है ये हमें कोई भी 4 डिग्री वाला वर्टेक्स नहीं दे रही है. सो दैट्स व्हाई वी हैव हियर n-2 rows. So h in columns h-2 columns and in rows h-2. So we have h-2 into v-2 number of vertices of degree 4. So this is the degree partition set of vertex set with respect to the degrees of vertices. So in this structure we have 4 vertices of degree 2 into h plus v minus 4 vertices of degree 3 and h minus 2 into v minus 2 vertices of degree 2. If we add all these vertices, we have the order of the graph hv hv, and which must be satisfied from the definition of the order. दूसरे लफ्ज़ में हम कह सकते हैं कि हमारे इस ग्राफ में जो वो h इंटू v जो है वो वर्टिसेस हैं. आप इजीली देख सकते हैं कि चूँकि हमारे पास h रो है, हमारे पास h जो है वो कॉलम्स हैं, v हमारे पास रोज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस जो होंगे वो h इंटू v होंगे. और ये चीज़ हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है जब हम तमाम नंबर ऑफ वर्टिसेस को ऐड भी कर रहे हैं. तो आप यहाँ से भी अपनी वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि क्या आपने तमाम वर्टिसेस की डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन
कर ली है। अगर तो ये हमारे पास ये सम और ऑर्डर जो है वो सेम आता है तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत हद तक ठीक होगी। लेकिन अगर ये सेम नहीं आता इसका मतलब ये है कि आपने या तो कोई वर्टेक्स जो है उसको मिस किया है या कोई वर्टेक्स जो है उसको ज़्यादा काउंट किया। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी ये समेशन और आपका जो ऑर्डर है वो इक्वल होने चाहिए। तो ये हमारे पास थी पार्टीशन सेट ऑफ वर्टेक्स सेट डिपेंडिंग अपॉन द वर्टिसेस ऑफ द डिपेंडिंग ऑन द डिग्रीज ऑफ द वर्टिसेस। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी एच सेट की पार्टीशनिंग की, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा गौर करेंगे उससे पहले मैं थोड़ा सा ज़रा रेस कर लें ताकि एच पार्टीशनिंग में हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए। यस, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अगर थोड़ा सा हम ऑब्जर्व करें वहाँ पर डिग्री यहाँ पे 2 है, डिग्री 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, 2 है, फिर 2 3 3 3 3 एंड 2 है, और यहाँ पे हमारे पास 3 है, 3 है, 3 और 3 है, और बीच के तमाम वर्सेस हैं उनकी डिग्री हमारे पास 4 है। ऑफ कोर्स ये भी हमारे पास एक एज है, तो ये हमारे पास 4 4 4 एंड सो। तो अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे इस ग्राफ में जो एज टाइप एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो एक एग्जिस्ट कर रहा है 2 इंटू 3, यानी एक वर्टेक्स की डिग्री जो है वो साइड की 2 होगी और एक वर्टेक्स की डिग्री जो है वो हमारे पास 3 होगी। तो हम देख सकते हैं इनको मैं रेड से मेंशन कर रहा हूँ, ये वो वर्टिसेस हैं जो हमारे पास 2 और 3 के कैटेगरी में लाई कर रहे हैं। तो ये आप देखते हैं ऑन 4 कॉर्नर वी हैव 8 एजेस, so there are 8 edges with degree 2 and 3. Next we have 3 into 3. There are many edges with degree, both ends have degree 3 and 3, but they lies in this scenario like this, 3 into 3, of course from the opposite side. So you can see that these vertices are in number. If we talk about age, I will explain only this row. So here we have vertices h minus 2 vertices because we exclude the corner ones. So h minus 2 vertices, and because this is a path, so path has edge less than 1, so minus 1. So there are h minus 2 minus 1 vertices of degree 3 3. Similarly on opposite side we have h minus 3, v minus 3, and similarly here v minus 3 vertices edges with both ends has degree 3 and 3. Then when we sum up this we obtain 2h plus 2 minus 12. So these are the edges with degree both ends 3 and 3. Similarly, if we talk about the edges with degree 3 and 4, we have this formula 2h plus 2v minus 8. Let's see how we will get this. First I try to remove some calculation here. So first notice that whereas edges of 3 here, these are the edges of 3 3. I mean just circle just for 3 4 3 4 3 4 and so on. You can see that these vertices are in numbers of, suppose if we if I select this, these are in numbers v minus 2. Why we are removing 2? Because the corner points are not giving 3 4. हमें जो कॉर्नर से जो मिल रहे हैं वहाँ पे हमें 3 4 नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हम उनको रिमूव कर रहे हैं। हमें 3 4 सिर्फ यहाँ से मिला जो मैंने सर्कल किए हुए हैं। v माइनस 2 है तो ये हमारे पास v माइनस 2 यहाँ से आ गया। इसी तरह ऑपोजिट साइड पे भी हमारे पास होंगे तो उसको हम करेंगे 2 इंटू वी माइनस 2 हो जाएंगे। इस तरह h की जब हम बात करेंगे तो h के केस में भी हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ आएगी 2 और 2 के केस में वो हमारे पास हो जाएगी 3 और 4 के केस में जब हम बात करेंगे तो हमारा जो हो जाएगी h माइनस 2 इंटू 2, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2h प्लस 2v माइनस 8। और बाकी जो बीच के एजेस हैं उन तमाम की जो हमारे पास डिग्री बोथ एंड्स की है, दे बोथ एंड्स हैव डिग्री 4 and 4. Of course using these techniques you can also find the edges with degree 4 and 4. So this is the technique, and when we all add all these types you will get the size.
Again here, your size and this summation must be same. If this is not same, then there is some mistake in your calculation, so you need to check again. तो सिंपल अगर हम बात करें तो आपने तमाम एच टाइप्स को जो है वो फाइंड किया है 2 3 3 4 3 3 3 4 4 4 को। अब आपने क्या करना है, इनकी कार्डिनलिटी को ऐड करना है। कार्डिनलिटीज को ऐड करने के बाद अगर तो वो आपके साइज़ के इक्वल आंसर आ रहा है, क्योंकि हम एजेस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कोई भी एज मिस नहीं होना चाहिए, तो साइज़ के इक्वल आंसर आ रहा है, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है उनका सम जो है वो साइज़ के इक्वल है, तो आपकी कैलकुलेशन काफ़ी हद तक जो है वो ठीक होगी। तो हमने यहाँ पे वर्टेक्स सेट की पार्टीशनिंग की डिस्कशन कर ली है, एस सेट की पार्टीशनिंग की जो है वो डिस्कशन कर ली है। अब इन्हीं को यूज़ करते हुए हम कुछ टोपोलॉजिकल इंडिसेस जो है वो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, फाइंड करेंगे कैसे हम इस टेबल को यूज़ करें, कैसे हम इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। पहले हम बात करेंगे जी फर्स्ट ज़ैग्रेब इंडेक्स ऑफ ग्रिड विद HV। तो हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको लास्ट टेबल में लेके जाऊं तो लास्ट टेबल में आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि हमारे पास 4 वर्सेस ऐसे हैं, इस वक्त थोड़ा गौर करेंगे, 4 वर्सेस ऐसे हैं जिनकी डिग्री जो है वो 2 है। तो इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे। देयर आर 4 वर्सेस ऑफ डिग्री 2 एंड दिस स्केल इज़ ड्यू टू द फॉर्मूला। ओके, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी 4 थी, डिग्री 2 थी, ये हमारे पास पहली टर्म होगी। अगेन आई बैक टू द प्रीवियस स्लाइड। अब हम बात करेंगे वो वर्सेस जिनकी डिग्री 3 है। ये हमारे पास तादाद में कितने हैं, 2 × h + v - 4 इनकी तादाद है और डिग्री क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। हमने कहा था कि ये तादाद है नंबर्स ऑफ वर्सेस विद डिग्री 3, ये इनकी डिग्री है। ठीक है, तो अब मैं मेंशन करते हैं फ्रीक्वेंसी, दिस इज द फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज द डिग्री एंड दिस इज फ्रॉम फार्मूला। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट किया है, प्लस का साइन आएगा, और लास्ट में हमने देखा था कि हमारे पास जो 4 वर्सेस वाले 4 डिग्री वाले वर्सेस हैं उनकी तादाद है हमारे पास h - 2 × v - 2। इसको हमने कैसे यूटिलाइज किया है अपने फार्मूले के अंदर, ज़ैग्रेब इंडेक्स के फार्मूले में। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास है ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्सेस ऑफ डिग्री 4। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, अपने वैल्यूज जो हैं ये तमाम टेबल जो है उसको अपने ज़ैग्रेब इंडेक्स के फार्मूले में हमने यूज़ किया है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक जनरलाइज फॉर रिजल्ट आ जाएगा। This generalized result tells that if we have the values of h and v, we just put the values of h and v in this formula and we get the first Zagreb index of grid with respect to given h and v। तो इसकी मदद से हमने एक फार्मूला जनरेट कर लिया है कि हम इस फार्मूला में जस्ट वैल्यू पुट करेंगे और हमें इसकी फर्स्ट Zagreb इंडेक्स फाइंड का जो है वो हमें आंसर मिल जाएगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे सेकंड Zagreb इंडेक्स की। हमें पता है कि सेकंड Zagreb इंडेक्स जो है वो एज बेस्ड है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना होगा, हमें एजेस की जो इन्फॉर्मेशन है उसको हमने यूज़ करना होगा। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास 2 3 डिग्री वाले कितने वर्सेस हैं, 8 हैं। 3 3 डिग्री वाले वर्सेस की फ्रीक्वेंसी इतनी है, इसी तरह 3 और 4 वर्सेस की फ्रीक्वेंसी इतनी है, और 4 और 4 वर्सेस की एजेस की फ्रीक्वेंसी हमारे पास इतनी है। इसी फ्रीक्वेंसीज को, इसी टेबल को हमने यूज़ किया है सेकंड Zagreb इंडेक्स को फाइंड करने के लिए। कैसे फाइंड किया देखते हैं जी। हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी 8 और एक साइड की डिग्री 2 है विद रिस्पेक्ट टू दिस। सेकंड जो टाइप है सेकंड साइड है उसकी डिग्री हमारे पास ये होगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई है। उसके बाद हमने देखा था कि द एजेस विद डिग्री 3 3 देयर quantity, their frequency is 2h + 2v - 12. This is the frequency and this is from the formula. Again the edges with degree 3 and 4 have frequency 2h + 2v - 8 and edges with degree 4 and 4 the frequency is given by this. And after this, if you put these values accurately here, after this is we have just simplification, and this expression give the simplified formula for the second Zagreb index for the grid graph. तो हमने ग्रिड ग्राफ के लिए फर्स्ट Zagreb इंडेक्स, हमने सेकंड Zagreb इंडेक्स फाइंड किया है। प्रीवियस स्लाइड में जो हमने टेबल डिस्कस किए हैं, इन्हीं टेबल को यूज़ करते हुए आप फॉरगॉटन इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं,
आपने वर्टेक्स पार्टीशनिंग यूज़ करनी है। और अगर कोई भी इंडेक्स एच सेट के ऊपर डिफाइन है, जैसे कि हमारे पास हार्मोनिक इंडेक्स है, रैंडिक इंडेक्स है, सम कनेक्टिविटी इंडेक्स है, तो उसके लिए आप एच सेट की पार्टीशनिंग को यूज़ कर सकते हैं और हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो सिंपल एज इट इज़ ही हो, जिस तरह की हमने कैलकुलेशन यहाँ की है। फर्दर हम कुछ स्लाइड में देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट मौजूद है। इस स्लाइड में हमने जी रैंडिक इंडेक्स फाइंड किया है। रैंडिक इंडेक्स का फार्मूला हमें पता है, वी नो द फार्मूला ऑफ रैंडिक इंडेक्स इज दिस and just we replace the values in this definition. Here is the frequency, this is 2 into 3 6, here is the frequency, this is 3 into 3, here is the frequency, this is 3 into 4, here is the frequency, and this is the degree of 4 cross 4, 4 cross 4. And after that we just we just provide us a little simplification. So this is the generalized formula for grid or Randic index for grid graph. Similarly, we have general Randic index. Here we have power alpha, so we could not simplify it much. So this is the expression for general Randic index. So I hope you understand this partitioning, because दो टेबल जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे वर्टेक्स पार्टीशनिंग के और एज पार्टीशनिंग के इम्पोर्टेंट थे वो, और उसको हमने आगे एक्सप्लेन भी करने की कोशिश की कुछ एक्सरसाइज की मदद से, कुछ एग्जांपल की मदद से। आप कुछ एक्सरसाइज हैं जो कि डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करेंगी आपको इस चीज़ में एक्सपर्टी शो कराने के लिए। लाइक अगर हम अपने कुछ सिंपलीफाइड सबसे पहले सिंपल एक्सरसाइज की बात करें तो हमारे पास है कंप्यूट द फॉलोइंग इंडिसेस ऑफ द जनरलाइज फैमिली। जनरलाइज मीन वी हैव टू टेक द n वर्टिसेस। n वर्टिसेस का मतलब यह है कि हमने कोई पर्टिकुलर ग्राफ लेके नहीं चलना, क्योंकि जब हम पर्टिकुलर ग्राफ की बात करेंगे जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर में किया है तो हमारे पास एक नंबर आएगा, लेकिन आज के लेक्चर में हमारा जो काम है वो हम जनरल ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो कंप्यूट द फॉलोइंग टोपोलॉजिकल इंडिसेस फॉर अ जनरलाइज्ड फैमिली ऑफ व्हील ग्राफ। ठीक है, आपने व्हील ग्राफ के लिए सम कनेक्टिविटी, जनरल रैंडिक और हार्मोनिक इंडेक्स फाइंड करना है। व्हील ग्राफ के लिए अगर मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कराऊँ कि व्हील ग्राफ हमारे पास क्या होता है, तो बेसिकली हमारे पास आप ये कंसिडर कर लें कि हमारे पास साइकिल के ऊपर सपोज अगर n-1 वर्टिसेस हैं साइकिल के ऊपर, हमने बीच में एक वर्टेक्स लगाना है +1, तो हमारे पास टोटल n वर्टिसेस हो जाएंगे। साइकिल के बाद आपने बीच वाले वर्टेक्स को हर एक से कनेक्ट कर देना है। सो दिस इज आवर व्हील ग्राफ ऑन WN। तो इस ग्राफ के लिए जब हमारे पास n वर्टिसेस होंगे आपने ये इंडिसेस फाइंड करने हैं। इसी तरह हम बात करेंगे कंप्लीट ट्राइपर्टाइट ग्राफ को। कंप्लीट ट्राइपर्टाइट ग्राफ का मतलब ये है कि आपका जो वर्टेक्स सेट होगा आपने उसकी पार्टीशनिंग कर लेनी है। सपोज अगर हमारे पास n वर्टिसेस हैं तो आपने उसके 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है। जैसे कि बाइपर्टाइट में हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ट्राइपर्टाइट में हमने इसको 3 में डिवाइड कर लेना है। और उसके बाद कंप्लीट का मतलब है कि आपने इस इधर के हर वर्टेक्स को, सपोज हमने इसको नाम दे दिया A, इधर B, इधर C, इसको आपने हर एक से कनेक्ट कर देना। ऑफ कोर्स इट विल बी डिफिकल्ट टू ड्रा हेयर बिकॉज इट विल बी वेरी मैसी। सो आपने ए के तमाम वर्टिसेस को बी और सी से ड्रा कर देना, और फिर आपने इनकी डिग्रीज देखनी है और उसके मुताबिक जो है वो आपने फिर ये इंडिसेस फाइंड करने की ट्राई करनी है। दीज आर सम सिंपल एक्सरसाइजेज, you must do it to gain the expertise. These graphs are one dimensional because we are using only one parameter here. Next we have circumcoron series. Of course, find the order, size and forgotten and harmonic indices. Here we have iteration. Remember here we have iteration, no number of exact number of vertices. जैसा कि हमने अपने ग्रिड ग्राफ में देखा था कि हमें ऑर्डर और साइज गिवन नहीं था, हमने उसको फाइंड किया था विद रिस्पेक्ट टू एच एंड वी। इसी तरह आपने की को यूज करते हुए आपने ऑर्डर एंड साइज फाइंड करना है। उसके बाद पार्टीशनिंग करनी है वर्टेक्स सेट की विद रिस्पेक्ट टू डिग्रीज ऑफ वर्टिसेस, उसके बाद एन एच सेट की। इस ग्राफ के बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। यहाँ पे के आइट्रेशन है, याद रखना है। के आइट्रेशन का मतलब है कि अगर आप पहली आइट्रेशन की बात कर रहे थे तो आपको जस्ट एक C6 मिलेगा, वो हमारे पास ये होगा।
उसके बाद अगर आप K2 की बात करोगे तो आपका ग्राफ जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा। एक्सटेंड होने का मतलब ये है कि इसकी 6 साइड्स थी हमारे पास साइकिल की, आपने हर साइड के ऊपर, हर एज के ऊपर एक और हेक्सागोन आपने अटैच कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये हमारे पास K2 हो जाएगा इसका। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारे पास इसका K2 हो गया। तो आपने इस ग्राफ को इस तरह अंडरस्टैंड करने की ट्राई करनी है। पहले K1 लेना है, फिर उसकी ग्राफ को ऑब्जर्व करना है, ऑर्डर को देखना है, साइज को देखना है, बाकी जो आपने पार्टीशनिंग को देखना है। उसके बाद K2 में आना है, उसके अंदर आपने साइज को देखना है, ऑर्डर को देखना है और पार्टीशनिंग देखनी है, एंड सो ऑन। K3 के अंदर भी आपने इसी तरह ही चीज़ों को ऑब्जर्व करना है और लेके चलना है। और आपने फाइनल ऑर्डर, साइज और फॉरगॉटन और हार्मोनिक इंडेक्स जो है वो आपने K की टर्म में आपने फार्मूला फाइंड करना है। K की टर्म में फार्मूला फाइंड करने का मतलब ये है कि हम जस्ट K की वैल्यू दें, आइदर K इज़ 1 2 3 4 5 6, हम जस्ट वैल्यू पुट करें और हमारे पास वहाँ पे ऑर्डर भी मिल जाए, साइज भी मिल जाए, फॉरगॉटन और हार्मोनिक इंडेक्स भी मिल जाए। याद रखना, जब भी आप काम करेंगे इस सब्जेक्ट में तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जनरलाइज फार्मूला को ड्राइव करें, ना कि हम कोई स्पेसिफिक ग्राफ लेके हम पर्टिकुलर उसके लिए एक्सरसाइज करें। तो ये हमारे पास है सर्कमक्रॉनियन सीरीज की का ग्राफ है और इसके लिए आपने थोड़ी सी वर्किंग करनी है। ओके, फर्दर रेफरेंसेस हैं। रेफरेंसेस से पहले मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि इस टॉपिक के ऊपर नेट के ऊपर बेतहाशा मवाद पड़ा हुआ है। बेशुमार हमारे पास स्ट्रक्चर ऐसे मौजूद हैं जिनके ऊपर लोगों ने काम किया हुआ है और डिफरेंट इंडिसेस निकाले हुए हैं। ऑफ कोर्स वो इंडिसेस आपको इतनी डिटेल में तो किसी भी पेपर में नहीं मिलेंगे, लेकिन उम्मीद है कि इस लेक्चर के बाद आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और फर्दर आप इसको दोबारा देखेंगे तो आपको मज़ीद चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो आपको गूगल से बहुत ज़्यादा लिटरेचर मिल सकता है जहाँ पे बड़े ग्राफ होंगे, जनरलाइज ग्राफ होंगे, उनके डिफरेंट इंडिसेस, ज़ैग्रेब इंडेक्स फर्स्ट, ज़ैग्रेब सेकंड, ज़ैग्रेब हार्मोनिक, जर्नल, रैंडिक और बेशुमार किस्म के इंडिसेस जो हैं वो कंप्यूट हुए होंगे, एग्जैक्ट आंसर गिवन होंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी 2 3 4 पेपर उठाएं, वहाँ से स्ट्रक्चर उठाएं, अपने तौर पर ऑर्डर, साइज और फर्स्ट ज़ैग्रेब इंडेक्स फाइंड करें और उसके बाद उसके अपने आंसर को और उस पेपर में जो भी इंडेक्स गिवन है उसके आंसर को आप मैच करें। तो ये चीज़ भी आपकी एक्सरसाइज के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो हमने कुछ जो रेफरेंसेस यूज़ तो नहीं किए, लेकिन आप जो इन रेफरेंसेस को देख सकते हैं। लाइक पहला रेफरेंस है असलम जमील, ये मेरा पेपर है। ऑफ कोर्स इसमें हमने टोपोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ सम डेंड्रीमा स्ट्रक्चर, हमने कुछ डेंड्रीमा स्ट्रक्चर लिए थे, डेंड्रीमा ग्राफ लिए थे और उसके अंदर हमने कुछ उनके टोपोलॉजिकल इंडिसेस को हमने फाइंड किया था। फर्दर हमारे पास है जी 4 वर्टेक्स डिग्री बेस्ड टोपोलॉजिकल इंडिसेस ऑफ नैनो ट्यूब्स। कुछ नैनो ट्यूब्स हमारे पास मौजूद थी, उन नैनो ट्यूब्स के हमने 4 डिफरेंट जो थे टोपोलॉजिकल इंडिसेस हमने कंप्यूट किए हुए हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ फर्दर ड्रग्स से रिलेटेड केमिकल स्ट्रक्चर थे, उनके ऊपर हमने काम किया है। जनरलाइज एटम बॉन्ड कनेक्टिविटी के ऊपर हमने सेवरल केमिकल मॉलिक्यूल्स थे, उनके ऊपर हमने काम किया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इनके अंदर से भी कोई पेपर जो है वो डाउनलोड करके उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा बेतहाशा मवाद जो है वो आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। ठीक है जी, आप जो है वो अपना एक्सरसाइज को ज़रूर सॉल्व करें और एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपकी है, जो भी आपकी क्यूरी है, आप ज़रूर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं क्लास के अंदर। और फर्दर जो लोग हैं वो कमेंट कर सकते हैं, अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं, अपनी क्यूरी जो है वो कमेंट कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है ये दिस लेक्चर विल बी हेल्पफुल टू कंप्यूट द topological indices of degree based topological indices. In our next lecture inshallah we will discuss some distance based topological indices for some graph structure. For next lecture अभी तक के लिए यहीं पर हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।